what would be the clickbait title of some popular movies? Oh, that's a really good question. Clickbait. Okay. So what is actually clickbait? You just have to understand the meaning of the clickbait. Clickbait का मतलब ये होता है ना कि right now we are living in this modern world जहाँ पे चीज़ों को बेचा जाता है उनकी उनके डिस्क्रिप्शन से कि what is actually existing. Like recently Samsung Galaxy S24 launch. Okay. एंड सैमसंग गैलेक्सी S24 कैन डू दिस लाइक वहाँ पे AI फीचर से वो दैट AI फीचर कैन डू दिस डू दैट डू दैट डू दैट डू दैट डू दैट ओके। ये सारी चीज़ें आपको बताएगी एडवर्टाइजमेंट में या किसी न्यूज़पेपर में या किसी इंटरनेट पे। ओके एंड यू आर रियली एक्साइटेड फॉर दैट थिंग और आपने उस फ़ोन को खरीद लिया एंड खरीद लेने के बाद you realize that कि the feature that they tell in their advertisement was completely fake क्योंकि inside the phone वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। there is no AI feature, there is nothing really at all। तो आपके साथ धोखा हो गया। so that is called clickbait। okay but actually clickbait sorry this is the kind of like something like process of clickbait क्योंकि ये clickbait में नहीं माना जाएगा क्योंकि clickbait is actually happen for kind of like a something like digital information or digital service। it shouldn't supposed to be kind of like a something really a product। okay क्योंकि product पे अगर clickbait नहीं होता product पे scam होता है। okay क्योंकि अगर उसने एडवर्टाइज ऐसी की है कि वहाँ पे AI फीचर है बट somehow you didn't गेट दैट AI फीचर so उसे क्लिकबेट नहीं कहा जाएगा उसे स्कैम कहा जाएगा कि मेरे साथ स्कैम हो गया। ओके क्लिकबेट इसे कहा जाएगा कि द इंफॉर्मेशन दैट दे टेल in the title in the thumbnail but when you watch the video is something really different। video is not actually telling the exact story so that is called a clickbait। okay so these are kind of like a something like clickbait। okay so basically question was that is there kind of like a something really movie that kind of like a showing you clickbait कि आपको एक तरह से दिखाया गया कि उस फिल्म में ट्रेलर में या पोस्टर में वो सारी चीज़ें हैं बट सम हाउ द मूवी वॉज कम्प्लीट डिजास्टर। व्हाट वुड बी दैट मूवी? ओके तो यूजुअली मूवीज़ में ऐसा होता नहीं। ओके बिकॉज मूवीज़ आर मेंट टू बी काइंड ऑफ लाइक समथिंग बिगर प्रोडक्शन क्योंकि वहाँ पे आपको चीज़ों को बेचना है। ओके तो फिल्मों में जो भी चीज़ें दिखाई जाती है वो एक्चुअल फिल्म में होती है बट yeah okay so there is one clickbait that I would say। okay it's not clickbait but it's kind of like something really policy for kind of like a classification privacy। okay so what is at least this thing? so there is a movie called Avenger Infinity War। okay and Avenger Infinity War वहाँ पे एक सीन था एक ट्रेलर में एक सीन था जहाँ पे कैप्टन अमेरिका हल्क then Black Widow then Black Panther, then not Iron Man, but the iconic shot was they shown in the trailer. Uh, in the movie, they didn't really have that shot in the movie. They didn't really approach the this thing was no. It's kind of like they create this shot for purposefully for as a clickbait। okay why? because like their story was very in very fragile condition। they don't really wanted to expose their story to the media before the launch of the movie so they just wanted to create some sort of fake thing जिससे लोगों का ध्यान फेक तरह से डाइवर्ट हो जाए और ओरिजिनल स्टोरी पे ज़्यादा लोग फोकस ना रहे। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली दे डू क्लिक बेट बट ये क्लिक बेट नहीं कहा जाएगा क्योंकि दे डिड क्लिक बेट फॉर काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली पॉजिटिव पर्पज। ओके क्योंकि आपको एक्सपीरियंस करने का मज़ा और भी ज़्यादा आए जब आप फिल्म देखेंगे तो उसका मज़ा डबल हो जाए। सो दैट्स वाई दे जस्ट डिड इट दैट काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली but usually I don't really see a kind of like in the film जहाँ पे clickbait हुआ है मेरा। no I don't really see it like every movie is meant to be purpose the exactly what they selling and they actually showing that thing। okay and it's really good it's really good but somehow ना कि कुछ कुछ फिल्म होते हैं जहाँ पे like I feel that the exaggeration of the film in the trailer was really great really big really high but when you see that movie
it's not really that much exaggerated. The in that movie was it's kind of like something really less than exaggeration. And what was that movie? So Pacific Rim Part 2. Okay, in the Pacific Rim they actually exaggerated that they have kind of like a something really big robot, big fight, and this and that and that. When you watch the trailer, you just literally pump up that ki, whoa, what the fuck, ये इतने बड़े बड़े robots and this and that. But when you watch the movie, it's kind of like a something really unrealistic, काफी unrealistic लगता है. First of all is that कि like a this robot is almost like a 10-story long robot. It's a very high robot, literally almost like a करीब 100 फीट 100-200 फीट बड़ा रोबोट होगा. इट्स अ वेरी एंड उस बड़े रोबोट को हैंडल करने के लिए सिर्फ 2 लोग होते हैं, only 2 people. This is kind of like a something really that कि how does they do that. And usually सारी चीज़ें काफ़ी मैकेनिकल है. It's I don't know, it's a kind of like a something really unrealistic, but it's in the movie so we can digest that thing, so okay, that's fine. Okay, but as also the villain, the monster, that kind of like a big dragon is actually way bigger. वो करीब 500 फीट बड़ा था. So it was kind of like a something really. And as also the way that the destruction was happened, it felt like that कि वो एक तरह से एक छोटे से दुकान पे एक छोटे छोटे बिल्डिंग्स बना गए and वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है ऐसा लग रहा था. इट्स नॉट रियली सेलिंग मी दैट लाइक बेसिकली जिस तरह से ट्रेलर में जिस तरह से चीज़ों को एग्जैचुरेट किया गया था कि दिस कुड हैपन इट डिडंट रियली डिलीवर दैट मच. एज ऑल्सो इज दैट थिंग कि जो लोग इस रोबोट को चला रहे थे, दैट 200 फीट लॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बॉम्ब रोबोट, वो लोग एक तरह से बच्चे थे. दे आर जस्ट अ किड, ऑलमोस्ट लाइक 16-17 साल के बच्चे थे. एंड आई वॉज नॉट रियली एक्सपेक्टिंग दैट कि 16-17 साल के बच्चों के पास एक न्यूक्लियर वॉर हेड था. दैट द रोबोट वॉज न्यूक्लियर वॉर हेड and they are actually saving the planet. It's I don't know यार dude. It's just like that ना कि अगर फिल्मों में इस तरह से कुछ दिखाना चाहते हो ना, just try to be do little bit of realistic, जिससे एक तरह से रियलिस्टिक अप्रोच बन जाए यार. ओके, 16-17 साल के बच्चों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड की परमिशन नहीं होती है, ऑलमोस्ट नो, क्योंकि उसके लिए एक्सपीरियंस, काबिलियत, उन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. उससे ही आप क्वालिफाई कर जाते हो कि यू आर दैट काइंड ऑफ लाइक अ पर्सन दैट यू कैन क्वालिफाई दैट काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली वेरी क्रिटिकल हार्डवेयर, क्रिटिकल काइंड ऑफ लाइक समथिंग रियली वॉर हेड. ओके, बट उस फिल्म में ये सारी चीज़ें भी दिखाई गई वॉज लाइक kind of like a something really gimmick. Okay, so for me, from my point of perspective, maybe Pacific Rim, not Pacific Rim 1. Pacific Rim 1 was really good. Like I really like the Pacific Rim 1. Okay, they actually tell us about the what is actually the robot, what is actually the war and things like that. But Pacific Rim 2 is a kind of like a something really चीज़ों को काफ़ी stretch किया गया, kind of like a something really to sell this movie to the mass audience, but somehow it's kind of like a something really a clickbait for me. I i think that it's a clickbait. Yeah.